Hello friends, welcome to our YouTube channel Top Education Corner. First of all, I would like to say that if you have not subscribed our channel, then please subscribe it and press the bell icon to get the first notification to you. Today's our topic is general knowledge, starting with the first question. Pure sulfur is red. Now first of all, sulfur it means a yellow combustible non-metal and the chemical element with atomic number 16. Let's say this statement is true or false. Option B, that is pure sulfur is red. This statement is false. Moving to the further question. Which of these countries does not border Brazil? Means below following में से कौन से countries Brazil को border नहीं करते? Let's see the options. Option A, Venezuela. Option B, Chile. Option C, Uruguay. Option D, Bolivia. Let's see which option is the correct option. Option B, that is Chile does not border Brazil. Moving to the further question. Which of these according to Greek mythology was the chief of gods? Means according to Greek mythology कौन से below following में से chief of gods नहीं थे? Let's see the options. Option A, Zeus. Option B, Thor. Option C, Cupid. Option D, Hades. Now Greek mythology it means it's a body of myths originally told by the ancient Greeks and a genre of ancient Greek folklore. Let's see which option is the correct option. Option A, that is Zeus. Moving to the further question. This Side of Paradise is a debut novel by which author? This Side of Paradise ये एक नॉवल है, लेकिन ये नॉवल किस ऑथर ने लिखा है? Let's see the options. Option A, Ernest Hemingway. Option B, Vladimir Nabokov. Option C, F. Scott Fitzgerald. Option D, J.D. Salinger. Let's see which option is the correct option. Option C, that is F. S. Fitzgerald. Moving to the further question. What's the name of the triangle with no sides of equal length? Let's see the options. Option A, isosceles. Now first of all, isosceles triangle it means a triangle with two sides of equal length. Option B, obtuse. Obtuse angle means a triangle with one obtuse angle greater than 90 degree. Option C, equilateral triangle means a triangle with all sides equal length. Option D, scalene triangle, it means a triangle with all sides of different length. Let's see which option is the correct option. Option D, that is scalene triangle. Moving to the further question. Titanic sank in the Pacific Ocean. Let's see this statement is true or false. Option B, that is Titanic sank in the Pacific Ocean. This statement is false. Moving to the further question. Which country gave America the Statue of Liberty? अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी कौन से कंट्री ने प्रोवाइड किया? लेट्स सी द ऑप्शंस. ऑप्शन ए इटाली. ऑप्शन बी ग्रेट ब्रिटेन. ऑप्शन सी कनाडा. ऑप्शन डी फ्रांस. लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन डी, दैट इज फ्रांस. मूविंग टू द फर्दर क्वेश्चन. व्हाट इज राइनोस हॉर्न मेड ऑफ? मीन राइनोस का हॉर्न किससे बना है? लेट्स सी द ऑप्शंस. ऑप्शन ए आइवरी. Ivory it means the hard white substance that the tusks of an elephant are made of. Option B, keratin. Keratin it means a protein that forms hair, nails, horns, etc. Option C, bone. Bone it means any of pieces of hard whitish tissue making up skeleton in humans and other vertebrates. Option D, dead skin. Dead skin it means exfoliating is the process of dead skin. Let's see which option is the correct option. Option B, that is rhino's horn is made up of keratin. Moving to the further question. Kathak, Nautanki, Jhora and Khaji are the important dances of dash. इनके आंसर्स कौन से स्टेट्स से हैं? लेट्स सी द ऑप्शंस. ऑप्शन ए कर्नाटका. ऑप्शन बी मध्य प्रदेश. ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश. ऑप्शन डी भोपाल. लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन सी, दैट इज दिस dances are of state from Uttar Pradesh. Moving to the further question. Ludhiana is situated on Dash River. Ludhiana कौन से स्टेट के यहाँ पे सिचुएटेड है? लेट्स सी द ऑप्शंस. ऑप्शन ए नर्मदा. ऑप्शन बी कृष्णा. ऑप्शन सी गोदावरी. ऑप्शन डी सतलुज.
Let's see which option is the correct option. Option D, that is Ludhiana is situated on the Satluj river. फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट हम आपको 4 PDF, 2 करंट अफेयर्स के एंड 2 जनरल साइंस की बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाएंगे. इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस इतना ही करना है कि हमारे किसी भी एक वीडियो को 10 कैंडिडेट्स या फिर 10 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है एंड इसका आपको हमें स्क्रीनशॉट भेजना है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है उसमें आपको ये सेंड करना है हम लोग को स्क्रीनशॉट, एंड आई विल सेंड यू 4 PDF बिल्कुल फ्री. Okay, moving to the further question. How much is the number of commands of Air Force? Means Air Force के number of commands कितने हैं? Let's see the options. Option A 7, option B 4, option C 9, option D 2. Let's see which option is the correct option. Option A, that is 7. Moving to the further question. MISA stands for dash. MISA किसके लिए स्टैंड होता है? लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए, मीडिया इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न अफ्रीका. ऑप्शन बी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट. ऑप्शन सी, मेंटल इलनेस सब्सटेंस अब्यूज. ऑप्शन डी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एसोसिएशन. लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. Option B, that is maintenance of internal security act. This stands for MISA, and this it means it was a law passed by Indian Parliament in 1971. Moving to the further question. National Institute of Occupation Health is located at dash. Means National Institute of Occupation Health ये कहाँ पे located है? Let's see the options. Option A Delhi, option B Mumbai, option C Kerala, option D Ahmedabad. Let's see which option is the correct option. Option D, that is National Institute of Occupation Health is located at Ahmedabad. Moving to the further question. Nuclear power is dash thermal power. Now first of all, nuclear power it means electric or motor power generated by a nuclear reactor, and thermal power it means it is a power station in which heat energy is converted to electrical power. Let's see the options. Option A lower than, option B cheaper than, option C heavier than, option D costlier than. Let's see which option is the correct option. Option B, that is nuclear power is cheaper than thermal power. Moving to the further question. Most commonly used bleaching agent is dash. Means सबसे ज़्यादा ब्लीचिंग एजेंट जो यूज़ होता है वो कौन सा है? लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी क्लोरीन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ऑप्शन डी पर ऑक्सीजन कंपाउंड. लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन ए, that is most commonly used bleaching agent is a chlorine. Moving to the further question. National anthem was first sung on dash. National anthem कब sung हुआ था first time? Let's see the options. Option A 21 January 1911, option B 19 December 1911, option C 5 February 1911, option D 27 December 1911. Let's see which option is the correct option. Option D, that is it was sung on 27 December 1911. Moving to the further question. Which is the main crop of Meghalaya? मेघालय का सबसे मेन क्रॉप कौन सा है? Let's see the options. Option A wheat, option B maize, option C rice, option D jawar. Let's see which option is the correct option. Option C, that is rice is the main crop of Meghalaya. Moving to the further question. The main reserves of phosphorus in the biosphere is in the dash. Let's see the options. Option A lithosphere. Now first of all, lithosphere it means the rigid outer part of earth consisting of the crust and upper mantle. Option B hemisphere. Hemisphere it means one half of the earth. Option C cryosphere. Cryosphere it means it's a frozen water part of the earth system. Option D geosphere. Geosphere it means all the rocks, minerals and ground that are found on the earth and in the earth. Moving to the further question, let's see which option is the correct option. Option A, that is the main results of phosphorus in the biosphere is in the lithosphere.
Moving to the further question. The headquarter of United Nations Fund for Programs Population Activities, that is UNFA, are at dash. Let's see the options. Option A, Bangkok. Option B, Bangladesh. Option C, Italy. Option D, New York. Let's see which option is the correct option. Option D, that is the headquarter of United Nations Fund for Programs Population Activities, that is UNFA, are at New York. Moving to the further question. The Indian Olympic Council was established in dash. मीन्स कि इंडियन ओलंपिक काउंसिल कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था. लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए 1924, ऑप्शन बी 1834, ऑप्शन सी 1936, ऑप्शन डी 1836. लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन ए, दैट इज द इंडियन ओलंपिक काउंसिल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1924. मूविंग टू द फर्दर क्वेश्चन. Malfunctioning of which of the following organ causes jaundice? Now, first of all, malfunctioning, it means it is used about a machine or a part of body and it failed to function properly. Let's see the options. Option A, pancreas. Option B, liver. Option C, heart. Option D, brain. Let's see which option is the correct option. Option B, that is liver. Moving to the further question. Which is the first country to host modern Olympics? कौन सा फर्स्ट कंट्री है जो मॉडर्न ओलंपिक्स को होस्ट करता है? लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ग्रीस. लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन डी, दैट इज ग्रीस. मूविंग टू द फर्दर क्वेश्चन. मदर टेरेसा वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ डैश. मीन्स मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज कौन से फील्ड में मिला था? लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए ह्यूमैनिटी, option B equality, option C peace, option D fraternity. Let's see which option is the correct option. Option C, that is Mother Teresa was awarded Nobel Prize in the field of peace. Moving to the further question. Which of the following acid is present in the vinegar? विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन बी एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी सिट्रिक एसिड, ऑप्शन डी नाइट्रिक एसिड. Let's see which option is the correct option. Option B, that is acetic acid. Moving to the further question. Which is the largest state in USA? USA में largest state कौन सा है? Let's see the options. Option A Alaska, option B Arizona, option C Texas, option D Nebraska. Let's see which option is the correct option. Option A, that is USA में सबसे largest state Alaska. Moving to the further question. FFC stands for dash. FFC किसका full form क्या है? Let's see the options. Option A Foreign Finance Corporation, option B Federation of Football Council, option C Film Finance Corporation, option D none of the above. Let's see which option is the correct option. Option C, that is FFC stands for Film Finance Corporation. Moving to the further question. गोल्फ प्लेयर विजय सिंह बिलोंग्स टू विच कंट्री? गोल्फ प्लेयर विजय सिंह कौन से कंट्री को बिलोंग करता है? लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी फिजी. लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन डी, दैट इज गोल्फ प्लेयर विजय सिंह बिलोंग्स टू द कंट्री फिजी. मूविंग टू द फर्दर क्वेश्चन. फर्स्ट अफगान वार टुक प्लेस इन डैश. मीन्स फर्स्ट अफगान वार कौन से ईयर में टुक प्लेस हुआ? लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए 1839, ऑप्शन बी 1843, ऑप्शन सी 1833, ऑप्शन डी 1848. लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन ए, दैट इज फर्स्ट अफगान वॉर टुक प्लेस इन 1839. मूविंग टू द फर्दर क्वेश्चन. फर्स्ट चाइना वॉर वॉज फॉट बिटवीन होम. चाइना का जो फर्स्ट वॉर है वो किसके साथ हुआ था? लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए चाइना एंड ब्रिटेन, ऑप्शन बी चाइना एंड फ्रांस, ऑप्शन सी चाइना एंड इजिप्ट, ऑप्शन डी चाइना एंड ग्रीक. लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन ए, दैट इज फर्स्ट चाइना वॉर वॉज फॉट बिटवीन चाइना एंड ब्रिटेन. मूविंग टू दी फर्दर क्वेश्चन.
विच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा? गोवा का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा? लेट्स सी द ऑप्शंस. ऑप्शन ए मराठी, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी कोंकणी, ऑप्शन डी बंगाली. लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. Option B, that is Konkani is the official language of Goa. Okay friends, here my video ends. And अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.